पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम. पर्सन मतलब व्यक्ति. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन. व्यक्ति के 3 प्रकार होते हैं. फर्स्ट पर्सन प्रथम व्यक्ति, सेकंड पर्सन द्वितीय व्यक्ति, थर्ड पर्सन तृतीय व्यक्ति. फर्स्ट पर्सन प्रथम व्यक्ति. स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन. बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं. एग्जाम्पल: आई मैं, वी हम लोग. फर्स्ट पर्सन refers to the speaker. It uses the subject pronoun I unless plural. First person example: I prefer coffee to hot cocoa. In this example, I am the speaker. This is the first person. Nominative कर्ता कारक. एकवचन I, बहुवचन we. Possessive संबंध कारक. एकवचन my, mine, बहुवचन our, ours. Accusative कर्म कारक. एकवचन me, बहुवचन us. Second person द्वितीय व्यक्ति. The listener is called a second person. सुनने वाले को second person कहते हैं. Example: you और your. तुम आप. तुम लोग आप लोग. Second person refers to the addressee. It uses the subject pronoun you. Second person example: you prefer coffee to hot cocoa. In this example, you is the addressee. The speaker is addressing you. This is second person. Nominative कर्ता कारक. एकवचन दाव, बहुवचन you. Possessive संबंध कारक. एकवचन दाय, दाइन, बहुवचन your, yours. Accusative कर्म कारक. एकवचन दी, बहुवचन you. Third person तृतीय व्यक्ति. About whom we speak or talk is called third person. जिसके बारे में हम बोलते हैं उसे थर्ड पर्सन कहते हैं. Example: he वह masculine, she वह feminine, it यह little, this यह near, that वह far. Name नाम. वे लोग. Those वो लोग. These ये लोग. Third person refers to a third party individual. It uses the subject pronouns he, she, it, they. Third person example: he prefers coffee to hot cocoa. In this example, he is the third party. The speaker is referring to him as the addressee. He prefers coffee to hot cocoa. Nominative कर्ता कारक. Masculine singular एकवचन he, feminine she. Plural बहुवचन neuter it, all genders they. Possessive संबंध कारक. Singular एकवचन masculine his, singular एकवचन feminine her, hers, singular एकवचन plural its, plural बहुवचन all genders their, theirs. Accusative कर्म कारक. Singular एकवचन masculine him, singular एकवचन feminine her, singular एकवचन neuter it, plural बहुवचन all genders them. Person meaning forms sentence to make yourself. I मैं, me मुझे, we हम लोग, us हम लोगों, you तुम आप,
yours तुम्हारा, your तुम लोग आप लोग, yours तुम्हारा, he वह, him उसका, she वह, her उसकी, it यह little छोटा, it उसका, this यह near नजदीक, them उसका, that वह far दूर, name आप, they वे लोग, them उन लोगों का, those वो लोग, them उन लोगों का, these ये लोग, them उन लोगों का. पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम. पर्सन व्यक्ति. Now we need to understand how many kinds of person on that we need to become a speaker of English. So it's very simple, very precise. We need to understand it. पर्सन को हिंदी में व्यक्ति कहते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन. व्यक्ति के 3 प्रकार होते हैं.